about overview of the brain. It will be a kind of introduction. So this is the skull cap, and we need to remove the skull cap to see the underlying brain. So let me just open it, and this is what we have is the brain. Now it's just to give you an orientation about how it is lying within the brain box. We have removed the dura mater, and just this is to show you how it is lying deep inside. So this is the brain, and as you have seen just now that there is hardly any space left once we put it inside. So according to the Monroe-Kelly doctrine, the three tissues are lying within the brain box, that is brain, blood and CSF. Now there is hardly any dead space for any of the three to expand. So any of one will expand, then obviously remaining two will have to compress, and the compressible thing is the brain. So suppose if there is an accumulation of the blood, then this brain tissue will get compressed, or if there is an excessive CSF inside, then again this brain tissue has to compress. So that is Monroe-Kelly doctrine. Now as I told you, we have removed the dura, so what we see is a thin pia mater all around covering the brain. Say this is a pia mater, and some of the blood vessels, cerebral blood vessels, are visible from the surface. See this. Now let's just see some of the measurements of the brain. So it is bit heavier. So what is the weight? In an adult male, on an average it weighs 1400 to 1500 grams, and in an adult female, on an average it weighs 12 to 1300 grams. Now just imagine this much heavy brain we need to hold over our cervical spine, along with the skull, along with the soft tissue, along with the blood, along with the CSF. Now just imagine, let me show you cervical spine. This is the cervical spine. Okay, so smallest vertebra out of all are the cervical one, and they have to carry this much of weight. So it is approximately weighing one brick. Now just imagine we need to carry a brick all along all the time while doing different activities. So to get rid of this much of weight, what is needed? We need to literally float this brain in the CSF. So all around brain and spinal cord, and within the brain and spinal cord, within the cavities, there lies CSF. That is a watery fluid, and literally this brain and spinal cord are floating in the CSF. So what happens with the CSF? The effective weight over the spine will reduces. It reduces to just 50 grams. I'm repeating, just 50 grams. Just imagine, from 1.5 kilogram to just 50 grams. So that is the importance of having CSF, and that is the importance of floating of the brain within the CSF. Now let's discuss some of the fascinating facts of human brain for its functionality. So as you know, it is just 1400 grams, that is equivalent to 2% of the body weight. But how much blood it needs, that is on an average 1/6 of the total cardiac output. That is 750 ml of blood per minute. That is 45 liters. I'm repeating, 45 liters of the blood per hour, and per day you can calculate. So just imagine the functional significance of the brain. Again, it needs 1/5 of the total oxygen requirement of the body. Okay, 20% of total oxygen needed from entire body is to the brain. Now let's overview parts of the brain. Developmentally, it is divided into forebrain, midbrain and hindbrain, or we can say prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. So overall, if we see, it is having cerebrum. See, this is the cerebrum.
postero-inferiorly cerebellum, see this, and here is the brainstem, okay, midbrain, pons and medulla. This medulla is continuous with spinal cord. Now each cerebrum is made up of two cerebral hemispheres which are connected in the midline by corpus callosum. So if we cut it open and see it from the side, see, this is how it looks like. So now you can clearly make out this is the cerebrum, cerebellum and brainstem made up of midbrain, pons and medulla, and similar thing you will see on the left side. Now developmentally, as I told, it is made up of forebrain, midbrain and hindbrain, prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. So what is prosencephalon? It is nothing but made up of two subdivisions, telencephalon and diencephalon. What is telencephalon? What you see on the surface is the telencephalon, cerebral cortex and the white matter. Now the cerebral cortex is convoluted, so 2/3 of the portion is hidden inside and only 1/3 of the portion is seen on the surface. So the surface projections are termed as gyri, okay, that is a plural form, and singular is the gyrus. So single elevation is termed as gyrus and single depression is termed as sulcus. So as we can call them as gyri and sulci, surface projections and depressions. And it is just because the surface area is 2200 square centimeters and that needs to be accommodated within this brain box. So obviously it has accommodated within this brain box. So obviously it has to get convoluted upon itself to make it compact enough to accommodate within the brain box. So that is about telencephalon. This telencephalon, or the process of formation of cerebral cortex, is termed as telencephalization. This is highest in human brain. So as we can say that human brain is highest in development, it is just because of telencephalon. And deep inside the telencephalon we will get a cavity. That cavity is termed as ventricle. So the ventricle or cavity of the telencephalon is lateral ventricle. So deep inside you will see lateral ventricle. Now next to the telencephalon, this area is diencephalon. Diencephalon is nothing but thalamus, and there are total 5 thalami constituting diencephalon, namely thalamus itself, hypothalamus, epithalamus, metathalamus, and somewhere over here will be subthalamus. So there are 5 thalamus together forming diencephalon, and the cavity of diencephalon, this territory, cavity of diencephalon is third ventricle. Now this third ventricle will get communicated with lateral ventricle, which is situated deep inside. This is septum pellucidum. So deep inside will be the cavity of lateral ventricle. This is the third ventricle, which is sagittally oriented. So as we have cut it open, the two halves of the ventricles are divided into each cerebral hemispheres. So this is the right half of third ventricle, which is in connection with the lateral ventricle through this foramen. This is termed as interventricular foramen or foramen of Monro. Okay, so the portion of cerebrum beyond this interventricular foramen or foramen of Monro, this portion, okay, this portion plus this entire portion belongs to the telencephalon, and beyond that is the diencephalon, this area up to midbrain. Okay, so just remember the brain, particularly the brain and spinal cord, they are having cavity throughout. Okay, and the cavities of the brain are termed as ventricles, cavity of the spinal cord is termed as central canal. They are continuous with each other. So we will get some connections between these ventricles and central canal, and this
cavity or the ventricles are in connection with the subarachnoid space, which is situated between arachnoid matter and pia matter over here all around, as we have discussed. And the CSF which is secreted into this ventricle will get shifted from these cavities to the subarachnoid space. There is a continuous circulation of CSF and will get absorbed somewhere over here in relation to the superior sagittal sinus. So we are discussing about the formation of CSF and a specific device made up of double folding of pia mater and capillary tufts forming a specific plexus that is termed as choroid plexus. Now, a portion of choroid plexus is seen in this section, so I just wanted to show you how a choroid plexus looks like. As I told you, it is nothing but double folding of pia mater containing tufts of capillaries. See this. This is the choroid plexus, and it is not only seen in lateral ventricle, but it is also found in third ventricle and fourth ventricle. See this. This is how it looks like. This is choroid plexus. Now this is left cerebral hemisphere, and you can clearly make out the cavity of telencephalon, that is lateral ventricle. This is left half of the cavity of diencephalon, that is third ventricle, and the communication between these two you can clearly make out from over here. This is interventricular foramen or foramen of Monro. Okay, so this is how these two ventricles are connected. So that is about prosencephalon or forebrain made up of telencephalon and diencephalon. Next to it is the mesencephalon or midbrain. This is the least developed part of central nervous system and it remains rudimentary. So this is the midbrain. Okay, this is the territory of midbrain, and as we have discussed, all the portion of brains are having cavity inside. So this is a small cavity like a duct cavity of mesencephalon. This is termed as cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius. Okay, so above it is connected to the third ventricle and below it is connected to the cavity of hindbrain. So below the midbrain will be hindbrain. So obviously it connects forebrain above to the hindbrain below. So this is the cavity of midbrain or mesencephalon, that is cerebral aqueduct. Now next to the midbrain is the hindbrain. It is made up of three structures: pons, medulla and cerebellum. So hindbrain or rhombencephalon, it is subdivided into metencephalon and myelencephalon. The metencephalon develops into pons in front and cerebellum behind, and from myelencephalon medulla oblongata is developed. Okay, so this is a cavity of hindbrain, fourth ventricle, and above it is connected to the cerebral aqueduct, and below it is continuous as central canal of spinal cord. Just because the medulla is continuous as spinal cord, and so as the cavity of fourth ventricle will continue as central canal. Now again, as I told you, there are choroid plexuses all around secreting CSF. So the tuft of capillaries embedded within double layer of the pia mater or tela choroidea, they are found in relation to lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle. So all these three ventricles are having choroid plexuses which are secreting CSF, and there is a continuous CSF circulation. So within all the ventricles continuously CSF is secreted, and from the roof of this fourth ventricle somewhere over here we will get three foramina: foramen of Meninges in the midline and foramen of Luschka on either side. These three foramina will communicate ventricle with the subarachnoid space, and CSF from this ventricle will enter into subarachnoid space, will fill subarachnoid space around brain and spinal cord, and finally it gets absorbed somewhere over here. Here lies superior sagittal sinus. So along the lateral wall of superior sagittal sinus, the CSF will get absorbed. So there is a continuous circulation of CSF. Now something about cerebellum or the small brain. So like two cerebral hemispheres connected in the midline by corpus callosum, similarly there are two cerebellar hemispheres, that is a portion of hindbrain, which are connected in midline by vermis. Now similar thing is in
over the cerebellum. So this is the cerebral cortex which is having convolutions. The cerebellar cortex is also having similar kind of surface irregularities. So there are some surface projections and there are depressions. Here the surface projections and depressions are termed as sulci and gyri respectively. Similarly, the surface projections and depressions over the cerebellar cortex are termed as folia and fissures. Folia plural form or folium, and fissures or fissure. Like to accommodate the large surface area of cerebral hemisphere, we need such surface irregularities and convolutions. Similar thing is applied to the cerebral cortex. So much of surface area has to be accommodated within the hindbrain below the tentorium cerebelli, and so as 15% of the surface area, 1/5, I'm repeating, only 15% of the surface area is seen over the surface, and 85% of the surface area of cerebellar cortex is seen in the form of fissures. So it is hidden. What you see is just 15% of the surface area, and that is best seen in the section. Let me show you the section. See here the section. This is the cerebellar cortex, and you can see the fissures are reaching deep inside within the white matter. Okay, and you can see each fissure is having a portion of cerebellar cortex. So 85% of the surface area of cerebellar cortex is hidden inside, forming a branching tree appearance. This is termed as arbor vitae cerebelli. So this is how the cerebellar cortex is oriented. Now let's discuss some of the facts of cerebral cortex. Its weight is on an average 600 gram, that is approximately 40% of the entire brain weight. So it is very crucial thing, and it accommodates large number of cells. The cells are either neurons, particularly their cell bodies, and neuroglia. So on an average, entire cerebral cortex accommodates 10 to 15 billion neurons, and the neuroglia are 5 times to the number of neurons, that is approximately 50 billion neuroglia. Just imagine this many number of cells, neurons and neuroglia are accommodated within cerebral cortex. If we talk about the number of neurons in terms of weight, then out of 600 grams of weight of cerebral cortex, 180 gram belongs to the weight of neurons, and remaining 420 gram is the weight of neuroglia. Now throughout the cerebral cortex, within the neurons, within the cell bodies, all around, it can store the memory. Now memory is stored in the form of RNA molecules or small, and in posterior cranial fossa, this is occipital bone, so deep inside will be the occipital pole. Let me show you again. So this is frontal pole, temporal pole, and occipital pole. So it is having 3 surfaces and 3 poles, plus it is having different lobes like frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe, and deep inside will be central lobe or insular lobe, okay, which is hidden. See this, deep inside you will get a portion of or hidden portion of cerebral cortex. See this is insular lobe, and at the junction of diencephalon and telencephalon, somewhere over here, there lies limb, constitutes the limbic system. So this is something about the external features of cerebral hemisphere. You will learn it in detail in a particular demonstration of cerebral cortex. So this is regarding an overview and highlight of the स्ट्रक्चर स्कल दैट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन इज नोन एज। तो जो बोन स्ट्रक्चर जो होता है ब्रेन के ऊपर, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है ये एक बोन स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन के ऊपर, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को आउटर अटैक से। अब जो क्रेनियम होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो बोन स्ट्रक्चर होता है ये 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बना होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बोन स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 क्रेनियल बोन्स। 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं जिनसे मिलकर बोन स्ट्रक्चर बना होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। What is the average weight of the human brain? तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका एवरेज वेट, औसतम वेट जो होता है, औसतम भार जो होता है वो कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
1400 ग्राम। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इसमें मेल ब्रेन की बात हो रही है, तो जो मेल ह्यूमन ब्रेन होता है उसका जो एवरेज वेट होता है वो होता है 1400 ग्राम। आपको एग्जाम में ऑप्शन में 1350, 1450 कुछ भी दिया जा सकता है, तो 1400 के करीब जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम वुमेन की बात करें तो जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, जो कि वुमेन्स का होता है, उसमें कितना भार होता है, कितना वेट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1200 ग्राम। जो एवरेज वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का वुमेन्स में वो होता है 1200 ग्राम। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वुमेन के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा 1200 ग्राम, और अगर मेल के लिए पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम। द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, वो कितने भाग में डिवाइडेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 पार्ट। जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको नाम याद रखने हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है सेरिबेलम और तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। ये तीनों ही नाम जो है आपको याद रखने हैं। इनमें क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछा जाता है कि ये जो पार्ट होता है ये ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेरिब्रम जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेटेड होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो होता है ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसको कितनी लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 लेयर्स। 3 लेयर होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 3 लेयर टिश्यू होते हैं इनका नाम क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेनिंजेस। मेनिंजेस जो होता है ये कहा जाता है 3 लेयर टिश्यूज को जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो 3 लेयर्स होती हैं इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आउटर लेयर होती है वो होती है दुरा मैटर, जो सेकंड लेयर होती है वो होती है एराक्नॉइड मैटर, और जो थर्ड लेयर होती है वो होती है पिया मैटर। तो ये तीनों नाम जो है आपको याद रखने हैं, दुरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो मैटर होता है ये कौन से पार्ट से रिलेटेड होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रेन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which disease is caused due to infection or swelling in meninges। तो जो meninges होती है उनमें swelling या फिर infection की वजह से कौन सी डिसीज होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा meningitis। meningitis जो होती है ये एक डिसीज होती है जो कि infection या फिर swelling की वजह से होती है meninges में। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि जो 3 लेयर टिश्यूज होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो वो होती है meninges। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो meningitis डिसीज होती है वो किससे रिलेटेड होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उससे रिलेटेड होती है meningitis डिसीज। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो ह्यूमन ब्रेन में जो सोचने की क्षमता होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो होता है ये पार्ट होता है ब्रेन में जो कि मेनली कंट्रोल करता है सोचने की क्षमता को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो भी हमारे सोचने की क्षमता होती है उसको जो कंट्रोल करता है वो करता है हिप्पोकैम्पस। और ये जो हिप्पोकैम्पस होता है ये ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हिप्पोकैम्पस जो होता है ये प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है हिप्पोकैम्पस। द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट। तो जो सेंसेशन जो होती है साउंड की वो हमारे ब्रेन में कितनी देर के लिए रहती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड। तो जो सेंसेशन होती है साउंड की वो हमारे ब्रेन में रहती है 0.1 सेकंड के लिए। तो ये जो होता है बहुत छोटा टाइम होता है, इतनी देर के लिए जो सेंसेशन होती है साउंड की वो हमारे दिमाग में रहती है। इन ह्यूमन ब्रेन विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ हंगर, थ्रस्ट और स्लीप। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसमें कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है जो कि फील कराता है हमको कि हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है या फिर हमको नींद आ रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये पार्ट होता है ब्रेन में जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हमें फील कराने के लिए हंगर, थर्स्ट, स्लीप और बाकी जो भी चीज होती है, टेम्परेचर हो गया, बाकी बॉडी फीवर हो गया, ये सब जो होती है ये सभी कंट्रोल करी जाती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो काफी इजी क्वेश्चन है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये स्टिमुलेट करती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। नर्व सेल न्यूरॉन्स कंडक्ट स्लैश स्प्रेड इन्फॉर्मेशन थ्रू। तो जो नर्व सेल होते हैं जिनको कि न्यूरॉन्स कहा जाता है वो स्प्रेड जो करते हैं इन्फॉर्मेशन वो किसके थ्रू करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू जो है न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। विच न्यूरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट। तो मसल मूवमेंट के लिए कौन सा न्यूरॉन होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है मसल मूवमेंट के लिए। तो हमारी जो मसल्स होती है उनकी जो मूवमेंट होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मोटर न्यूरॉन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो जो मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है ह्यूमन ब्रेन का वो कौन सा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है उसमें सोचने की जो क्षमता होती है वो पार्ट जो होता है ह्यूमन ब्रेन का जिसके द्वारा हम सोचते हैं वो होता है फोर ब्रेन। विच पार्ट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू विजन एंड द हियरिंग पावर इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी देखने की और सुनने की जो पावर होती है उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोर्पोरा। कोर्पोरा जो होता है ये पार्ट होता है जो कि कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस को, विजन और हियरिंग पावर के। अब ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन कंट्रोल करता है विजन और हियरिंग पावर को, बल्कि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं विजन और हियरिंग पावर के उनको कौन कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोर्पोरा। अगर आपसे रिफ्लेक्सेस पूछा जाएगा तो आपका आंसर कोर्पोरा होगा, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का और सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। When the temperature of the body increases, dash sends a signal to the sweat producing skin gland, causing them to release water. Most important question है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हमारी जो बॉडी होती है उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कौन होता है जो कि सिग्नल भेजता है स्वेट प्रोड्यूसिंग स्किन ग्लैंड को कि आप जो है वो वाटर रिलीज करें, मतलब आप जो है स्वेट रिलीज करें जिससे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो कम होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये सेंड करता है सिग्नल को स्वेट प्रोड्यूसिंग स्किन ग्लैंड को कि आप जो है स्वेट को रिलीज करें जिससे कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन हो। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है या फिर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बीइंग्स डिटेक्ट। तो जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में वो क्या डिटेक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मेल। जो स्मेल होती है जो हम सूंघते हैं उसकी जो क्षमता होती है वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के द्वारा डिटेक्ट करी जाती है। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ह्यूमन ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो जो हमारा ब्रेन है वो मेनली किससे बना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। जो नर्व सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। बाकी और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है न्यूरॉन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज लिटिल ब्रेन। तो छोटा दिमाग किसको कहा जाता है हमारे ब्रेन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है जो कि तीसरा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का उसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है।
हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन? तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो किस फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंसरी प्रोसेस। जो भी सेंसरी प्रोसेस होते हैं उन सब में रेस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। अभी हमने पीछे डिस्कस करा था कि टेंपरेचर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। उससे पीछे हमने डिस्कस करा था कि स्लीप के लिए, हंगर के लिए, थर्स्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस। जितने भी सेंसरी प्रोसेस होते हैं सबके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन ब्रेन? तो हमारा जो दिमाग होता है उसमें सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो होता है ये सबसे छोटा ऑर्गन होता है ह्यूमन ब्रेन में। सबसे छोटे पार्ट की बात करी जाए तो सेरिबेलम जो होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, और सबसे छोटा ऑर्गन होता है पाइनियल ग्लैंड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो पाइनियल ग्लैंड और स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा जाए तो सेरिबेलम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और